31 हम 131 whatever number. we were part of that. ठीक है अरे भाई तो सिंगल जज का उसके बियॉन्ड कोई नहीं. तो नाउ दिस इज नॉट इन डिस्प्यूट. Not in dispute. That they are not extending you the benefit of the Yes. pension. The dispute is that what should be the Rate. pension rate at which pension will be made admissible. Now where is that? That is I'll just point out. Because that was not the controversy before the single judge in the earlier round of That was the litigation. precise controversy. कहाँ आंसर किया उसको बताइएगा. मैं सर उसको वही तो थोड़ा सा That is true. नहीं ये झगड़ा नहीं है. झगड़ा ये नहीं है. कहाँ इनका अमेंडमेंट. इन्होंने स्कीम को अमेंड कर दिया. सर वो स्कीम सर पूरा पढ़ना पड़ेगा सर जजमेंट. जजमेंट नहीं पहले स्कीम बताइए कि क्या स्कीम थी, क्या इन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया, किस तरीके से इन्होंने आपका जो है आउटफ्लो टू एन एम्प्लॉय उसको रिड्यूस किया. जब तक आप ये फैक्चुअल मैट्रिक्स नहीं बताएंगे तब तक ये जजमेंट में वो सारा कुछ सेटल नहीं. होगा. वकील साहब ऐसा नहीं होता है. आप पहले मुझे फैक्ट्स बताइए, फैक्ट्स से पहले कन्विंस करिए, उसके बाद में फिर आगे की बात बताइएगा. तो ये बताएंगे सर ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमें पेंशन देना स्टार्ट नहीं हुआ था इसलिए आप उस जजमेंट का फैसला बेनिफिट नहीं ले सकते. हमारा ये कहना साहब हमने तो जब इनको सुनते हैं पहले. अग्रवाल साहब बताइए. मैं कहने ही वाला था ये कि अच्छा होता मैं चालू कर देता. हालांकि राइट इनका है लेकिन इसलिए क्योंकि ये रॉन्ग साइड में ले जा रहे हैं. मैं समझ गया था तभी तो मैं इनको राइट साइड लाने की कोशिश कर रहा था. सर मैं आप थोड़ा बहुत मेरे को अकाउंट्स का आता है. मैं सर nutshell of the matter, what is the controversy all about? There was a scheme which was formulated by the Madhya Pradesh state where the employees of Madhya Pradesh Warehousing Corporation. We superannuated somewhere in the year 2002. Dates are different. I'll just point out the dates here. This is as regards the grant of pension in terms of a scheme which was formulated by the Madhya Pradesh State Warehousing Corporation along with LIC. This is the policy which was supplied to us by the corporation is not the Madhya Pradesh State Warehousing Corporation Employees Pension Regulations 1996. I'll just hand over a copy. I was directed to file give the translated version of this. I have just translated. Who asked you to file translated version? This honorable court. I asked you to. नहीं इसके पहले आपसे पहले ऑर्डर शीट है था उसमें. अच्छा किस तारीख की है? सर वो हमने तो कभी आपसे ऐसा गुस्ताखी नहीं करी. नहीं सर मैं गुस्ताखी सर 12/6 हाँ लास्ट टू ये शायद सर 25/10/23 के आसपास कभी 25/10/23 जी. अच्छा हाँ ठीक है जी तो मैं ले लीजिए. So now they have started giving them pension, or the employees got their dues in terms of this regulation. Now there lies a dispute somewhere in the year 2002-2003. The LIC claimed the amount of percentage which an employee is required to be, which the warehousing corporation is required to refund to the LIC. That was not in accordance with the scheme. Hence, they depleted the pension which was being granted to the employees. They challenged before this honorable court. The matter was contested. Initially, the honorable landed single judge was of the view that the matter can be relegated to the authorities by certain directions. That matter was agitated before the division bench. The division bench relegated the matter back to the honorable landed single judge with the direction that, in light of the judgment delivered by the honorable Supreme Court in the case of Air India, the matter we again be visited. Now, withstanding that Air India judgment, it was said all those employees, 131 who was there in the list, should be granted benefit of the pension which was actually agreed upon. Because upon retirement, their corpus get transferred to the warehouse LIC, and the annuities were purchased. Once the annuities are purchased, there cannot be any depletion of their pension. So we are the employees who retired in the year 2002, and we are the one whose pension corpus was transferred to LIC. But since the dispute started, we were never issued with any pension as such. Interimly, in view of the directions passed by interim directions passed by this honorable court and the division bench, they started giving us pension, but not on that rate which we are claiming. Now we say that it is covered by the judgment passed by this honorable court relying upon Air India, and they dispute that no, we are not entitled to the very same rate of pension because our pension never got started. So this is the controversy. I'll just rely over certain provisions of this regulation 1996 and the judgment passed by the honorable landed single judge, which ultimately have decided it. So the petitioners were employees, they retired on different days. Mr. Keshi Sabu retired on 31/3/2000. That is not relevant, Shari. They were all members. Yes, all members of the scheme. I'll just point out certain provisions of the scheme that is much important. May just come to this English version of. English version की कॉपी अग्रवाल साहब को भी दे दीजिए. मैं दे रहा हूं सर. You are appearing for LIC. LIC. For LIC. 2-3 प्रावधान है सर जिसको जो कॉर्पस का डेफिनेशन है सर कॉर्पस कैपिटल ओ में है जी कॉर्पस कैपिटल मींस एन अमाउंट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 9.8 मंथ सैलरी और अ मैक्सिमम ऑफ 45 मंथ सैलरी फॉर ईच क्वालिफाइंग ईयर्स इन प्रोपोर्शन टू द सैलरी ऑफ द रिटायर्ड एम्प्लॉय द डेट ऑफ रिटायरमेंट. The said corpus can also be more than equivalent to 45 months, which is, as per LICs, will be able to be increased in proportion to the income received from investment. Now, Manoj, just turn to clause 25, that is calculation of pension amount. Clause 25, page number. Page generation 9 सर. इसी का clause है. उसका हिंदी वर्जन रिकॉर्ड पे उसके पेज बता दूं मैं. और अंग्रेजी रहे तो calculation of pension amount. जी सर. The pension will be calculated based on the qualifying service year completed. A period of 6 months or more will be considered as a complete year, whereas a period of less than 6 months will not be considered. The final pension thus calculated and the amount of expected pension on temporary pension will also be calculated to the next whole rupee. Now, Manoj, may just come to the term scale of pension. Yes, sir. जी. Scale of pension. जी.
Subject to the provision of Rule 23B, a corporation employee retiring in accordance with this regulation after completing qualifying service, which shall be not less than 20 years, shall be entitled to an amount of pension received by him for each completed year of qualifying service. Pension will be received at the rate of so-and-so emoluments, which should not exceed 45% of the salary. In future, there may be increase in the rates mentioned in clause 27A for determining pension. In this case, the pension will be calculated accordingly. 23B क्या कहता है? जी 23B क्या कहता है? 23B. If an employee of the corporation has opted for pension and takes retirement for any reason before completing 20 years of qualifying service, he will have the right to receive only 1/3 of the corpus fund amount. An employee of the corporation who has taken retirement before completing 10 years of qualifying service will not get any benefit under this scheme. ये सर उस पे है voluntary retirement. हाँ ठीक है चलिए ठीक So this is not a case of voluntary हाँ, retirement. ठीक. It is upon normal retirement. Corpus में सर specific है बड़ा. Corpus capital means an amount which is equivalent to so and so so and so so and so. इसमें कहाँ डिटर्मिनेशन है कि कितना मिलेगा? नहीं इसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कितना मिलेगा. आपने यही तो केस बताया सर मैं आपको उसको एक एक करके सर थोड़ा सा वक्त लगे थोड़ी क्योंकि रिमांड हो गया. डिटर्मिनेशन सर इनके एंड पे होना था. इनका ये कहना है कि एक्चुअलियन वैल्यूएशन धीरे धीरे डिप्लीट हुआ तो ओरिजिनल हमने क्योंकि उस समय हमारा प्रोसेस ही नहीं किया था क्योंकि डिस्प्यूट हो गया. अब मैं रीड द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट मलोड इन दैट रिगार्ड दैट व्हाट वाज द एक्चुअल कंट्रोवर्सी एंड हाउ आई से मलोड दैट इट कवर्स माय इशू आल्सो. माय रिलीफ इज वो सर हमने एक एप्लीकेशन टू टेक डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड के साथ लगाया. एयर इंडिया का जजमेंट भी है और WP 4318 2002 का भी जजमेंट है पेज 70. दिस इज IA सर कॉपी टू टेक जजमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हमने फाइल किया. कब फाइल की? आइए नंबर बताइए इसका ये कोर्ट ऑर्डर से परमिट हुआ था तो. अरे वकील साहब मैं सर आइए नंबर बता दूं. ना कुछ तो बिगड़ थोड़ा होगा. ना सर मैं देखता नहीं नंबर बता दूं. नहीं शायद से स्कैन नहीं होगा ये. एक्स्ट्रा कॉपी सर आपके पास है? ये अमेंडमेंट थी ये हाँ ये पता नहीं फाइल हुआ कोर्ट को ऐसे दे दिया था. नहीं 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 ये हो सकता कोर्ट को हैंड ओवर करना है नहीं सर. सर इसकी कॉपी में अगर ये सिर्फ जजमेंट है सर जो इंटरनली हुए दिखाइए ना कहाँ है सर. मैं सर उस समय शायद दे दी गई थी तो जी कॉपी नहीं तो नहीं लास्ट टाइम ये है ना. जी बताइए. हाँ मेरे पास देख मैं रीड द जजमेंट सर. हम बताइए. Petitioners herein were employees who are working with the कहाँ पढ़ रहे हैं? जी मैं पैराग्राफ 3 से पढ़ रहा हूँ. पैराग्राफ 3 ऑफ WP RS शास्त्री का जो जजमेंट 82 जी ये पहली बार में जो रिमांड होकर आया था डिवीजन में जजमेंट है सर 81. उसके बाद 82 है सर. जी Petitioners herein were employees who were working with the Madhya Pradesh State Warehousing Corporation. They have retired from service and detailed chart showing the particulars of the petitioner, the post held by them. The date of retirement, the particulars of pension payment orders issued each of them, and various other particulars are available in the chart annexed to each of the petition. In this case of the petition, that a pension scheme was formulated by Madhya Pradesh State Warehousing Corporation on the basis of the powers conferred to it under Section 42 of the Warehousing Corporation Act. Pension scheme is known as simply State Warehousing Corporation Employees Pension Scheme. The said scheme came into force with effect from 1496. Various provisions were made in the said scheme, and according to the petitioners, they were being paid pension under the aforesaid scheme right from 1196 or from the date of retirement up to 2002. When the dispute in question has arisen, fact that had come on record indicates that in India 1994 a decision was taken by the management of corporation to explore the possibility of introducing a pension scheme. For the said purpose, it is stated that the branch manager of the Life Insurance Corporation of India approached the management of the Warehousing Corporation by letter dated 22/596. After certain initial negotiation, it was stated so in this letter that the pension scheme, if introduced by the corporation, would be viable and the total liability of the Warehousing Corporation would not exceed 10% of the salary DA allowance payable to the employee. This was which was already being paid towards contributory provident fund thereafter to जी एयर इंडिया का क्या फैसला है? सर ये शुरू होता है मैं इनका समझ गया. उन्होंने ये कहा that the LIC cannot withdraw the scheme. दी LIC ठीक है. सिर्फ इतना ही रेशियो है सिंगल जज का. जी ठीक है. अब सर एक इंपॉर्टेंट चीज है सर मैं एयर इंडिया में क्या कहा ये एयर इंडिया वाला मैं फैसला जहां से रेफर हुआ क्योंकि आपने जो इशू उठाया है वो दूसरा है. आपका इशू है that how the annuity will be computed, Yes. whereas that is in the realm of factual metrics of the case. जी जो सिंगल जज का जो फैसला है वो ये है कि LIC ने कहा कि हम पूरा कॉर्पस सरेंडर कर देते हैं
आप स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हैं, वो तो तो सिंगल जज ने ये कहा कि दे कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम द स्कीम एंड दे विल हैव टू entertain their commitment to pay the pension to the employees who were part of that scheme. 131 employees. हम 130 or whatever we number. were also part of that ठीक है अरे भाई, तो सिंगल जज का उसके बियॉन्ड कोई नहीं, तो नाउ दिस इज नॉट इन डिस्प्यूट, Not in dispute. that they are not extending you the benefit of the Yes. pension. The dispute is that what should be the Rate. pension rate at Rate. which pension Rate. will be made admissible. Rate. Now where is that? That is I'll just point out, sir. Because that was not the controversy before the single judge in the earlier round of That was the litigation. precise controversy, sir. कहाँ आंसर किया उसको बताइएगा, मैं सर उसको वही तो थोड़ा सा पूरा थोड़ा पढ़ा, सा नहीं, उसको डायरेक्ट आइए ना, पेज 22 पे आ जाए सर, पेज 22 ये सॉरी पैरा 22 पे। पैरा 22 सर ये थोड़ा सा सर पहले से पढ़ना पड़ेगा, पेज पैरा 20 से सर 20 से पढ़िए जी। Even though she sir, on try to justify their relevant claims by referring to various correspondence, calculation, charts, data available on record, I am of the considered view that the question as to whether the benefit which was granted to each of the petitioner herein after retirement and after the PPOs issued to them can be withdrawn or changed in the manner done in no more in dispute. The entire law in this regard stands settled by the Supreme Court in case of errand employees. The case before Supreme Court was also similar in nature, pertains to grant of benefit of an employee retiring from service, an amendment made by the LIC in a pension scheme, which was being enforced in the said date. In that case, also scheme under which pension was paid to the employee was known as defined benefit scheme or plan, and not defined contribution plan. In the case before Supreme Court, also certain employees were getting the benefit, but the benefit of pension which was being received by them under the scheme was stopped. Withdrawn and excess payment recovery on the basis of the certain amendment to the scheme was made retrospective. The petitions filed by the employees before the High Court having been allowed, matter traveled to the Supreme Court, and the Supreme Court considered the matter, and after taking note of the benefit accrued to the employee under the defined benefit scheme, it is held by the Supreme Court that the retired employees received what were receivable by them according to the existing scheme on the date of their retirement. This is very important. That is true. नहीं ये झगड़ा नहीं है, झगड़ा ये नहीं है, कहाँ इनका अमेंडमेंट, इन्होंने स्कीम को अमेंड कर दिया। सर वो स्कीम सर पूरा पढ़ना पड़ेगा सर, जजमेंट नहीं, पहले स्कीम बताइए कि क्या स्कीम थी, क्या इन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया, किस तरीके से इन्होंने आपका जो है आउटफ्लो टू एन एम्प्लॉय उसको रिड्यूस किया। जब तक आप ये फैक्चुअल मैट्रिक्स नहीं बताएंगे तब तक ये जजमेंट में वो सारा कुछ सेटल नहीं वकील साहब, ऐसा नहीं होता है। आप पहले मुझे फैक्ट्स बताइए, फैक्ट्स से पहले कन्विंस करिए, उसके बाद में फिर आगे की बात बताइएगा। यू हैव टू फर्स्ट नैरेट द फैक्ट्स कि कब इन्होंने स्कीम को मॉडिफाई किया, कब जो है उसको रिट्रोस्पेक्टिवली फैक्चुअल डाटा इस जजमेंट में है। नहीं ऐसा नहीं होता है, फैक्चुअल डेटा जजमेंट में नहीं होता, फैक्चुअल डेटा पिटीशन में होता है। जजमेंट इज ओनली रेड टू एड एंड असिस्ट यू, ठीक है। मुझे वो डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने देख लिया इसको। सर मैं एक चीज, वो डेटा कहाँ है, मुझे वहां डेटा से शुरू करिए। मैं डेटा से शुरू कर रहा हूं सर। वो डेटा मेरे केस में इसलिए नहीं है अवेलेबल क्योंकि हम जब रिटायर हुए, इनका एक कंट्रोवर्सी हाईकोर्ट में चल रहा था, हमारी पेंशन इन्होंने बंद कर दी। ये सारे मैटर्स वो तो हाईकोर्ट ने कह दिया दैट दे कैन नॉट स्टॉप। मैं कह रहा हूं ये सारे मैटर्स टैग हो गए उसके साथ जाके, हमारा मैटर भी टैग हो गया। जब हमारा मैटर टैग हो गया और सिमिलर ऑर्डर हो गए तो दे फाइल्ड, व्हेन वी फाइल्ड अ कंटेम्प्ट, दे फाइल्ड अ रिव्यू सेइंग सो कि सर हमने इस पे जवाब नहीं पेश किया और आर एस शास्त्री का फैसला जो है इन पे लागू कर दिया गया। इन पे नहीं लगता क्योंकि इनको हमने कोई पेंशन देना चालू ही नहीं किया था। चलिए वो तो कंट्रोवर्सी डिसाइड हो गई कि ये अपनी स्कीम को विड्रॉ नहीं कर सकते और जो कर्मचारी उसके मेंबर्स थे उन कर्मचारियों को इनको पेंशन देना पड़ेगा। यहाँ तक डिस्प्यूट नहीं है। नाउ द डिस्प्यूट हैज ट्रेवल्ड बियॉन्ड इट। आई डोंट थिंक मिस्टर अग्रवाल इज डिस्प्यूटिंग दिस फैक्ट दैट यू आर एंटाइटल्ड टू पेंशन। Now the dispute is in a narrow compass as to what will be the quantum of the pension admissible to you, and that has not been decided in this case. Sir, may I just humbly submit what our case? नहीं, please don't. नहीं, पहले जो बात पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। सर मैं एक एक करके तो बताऊं। मेरा निवेदन था सर कि इसमें ये थोड़ा सा ये ऑर्डर इसलिए बेनिफिशियरी है क्योंकि इस ऑर्डर में हमारी पिटीशन भी टैग होकर सुनवाई हुई थी इसकी। नहीं वो इशू ही नहीं है। इशू अभी जो है उसका उत्तर दीजिए। सर उसका उत्तर पहले ये बताइए। नहीं उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्ट की, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे LIC ने एग्री किया था, वेदर एनी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉर्पस वाज टू बी डिसबर्स्ड in favor of the employees as a pension, or it was a variable component depending on the purchasing value of the annuity. These all facts are required to be demonstrated. Without that, this matter will not proceed. But I bow down to your lordship's contentions. My lords are absolutely right that it has to be taken care of. Now, my respectful submission, if my lord may just bear me for a moment, we all are similarly placed employees. There was only one scheme which the LIC made along with the warehousing corporation. Right. These 131 employees are those employees against which the scheme was made operative, and they were released with the pension at a particular rate. We were the ones because this is an ongoing process of a person retiring from an institution. तो 4 लोग रिटायर हुए, आपने पेंशन देना शुरू किया, 5 लोग और हुए, आपने पेंशन देना शुरू किया। अब जब 96 से लेके 2002 तक there was no issue as regards release of pension to the employees at a particular rate. 2002 में एक controversy came into being where the LIC for the first time said कि what all contribution the warehousing corporation is making, that contribution will not entitle them to receive higher rate of pension. Now we were the employees who superannuated at that point of time. तो इन्होंने एक ऑर्डर से पेंशन वगैरह सब रोक दी, कहा कि साहब की बात पे भी मत जाइए। अभी तो ये बताइए कि आपका कौन सा हायर रेट पर पेंशन का एंटाइटलमेंट आता है? वो इस ऑर्डर से आता है सर। नहीं इस ऑर्डर से हायर रेट का नहीं आता है। इस ऑर्डर से सिर्फ ये आता है दैट दे कैन क्वांटम ऑफ पेंशन जो है वो कैसे डिसाइड होगी? वो क्वांटम ऑफ पेंशन डिसाइड होगी सर इनके स्कीम में जो फार्मूला दिया हुआ है। मैंने कहां है फार्मूला? हां, वेयर इज दैट फार्मूला? दैट स्कीम में जो फार्मूला है उससे पढ़िएगा ना 25
है पेस्ट ये सर पैरा 25 पढ़ा मैं। जजमेंट का। नहीं सर, स्केल ऑफ पेंशन। हाँ वो तो पढ़ लिया, ठीक है, उससे उसमें फॉर्मूला ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला से। वो तो सर फिर उनकी जो स्कीम है वो स्कीम कहाँ है, वही तो पूछ वो रहा हूँ इन्होंने आपसे। फाइल की है रिप्लाई में। हाँ वो स्कीम बताइए क्या फॉर्मूला है एंड हाउ यू वांट टू टेस्ट दैट फॉर्मूला टू बी अगेंस्ट यू, इतना बताना है आई आपको। एम नॉट टेस्टिंग द फॉर्मूला अगेंस्ट मी मतलब। I am a person wherein the honorable learned single judge after relying airport authority have said कि जब आपने कॉर्पस से रेट ऑफ रिटायरमेंट पे एन्युटीज परचेस कर ली तो उसके नीचे का डिप्लीशन नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें कोई तो डिस्प्यूट हम नहीं भी वही कह रहे हैं कि साहब हमारा हम जब 2002 में रिटायर हुए तो हमारी एन्युटीज तो परचेस कर ली गई। है। 2002 में कितने पे की वो बताएंगे ना, किस रेट पर की है सर वो उन्होंने। तो ये बताएंगे सर, ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमें पेंशन देना स्टार्ट नहीं हुआ था इसलिए आप उस जजमेंट का फैसला बेनिफिट नहीं ले सकते। हमारा ये कहना साहब हमने तो जब ये इनको सुनते हैं पहले, अग्रवाल साहब बताइए। मैं कहने ही वाला था अभी हाँ। कि अच्छा होता मैं चालू कर देता, जी। हालांकि राइट इनका है, जी। लेकिन इसलिए क्योंकि ये रॉन्ग साइड में ले जा रहे हैं। मैं समझ गया था, तभी तो मैं इनको राइट साइड लाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, सर मैं आपको थोड़ा बहुत मेरे को अकाउंट्स का आता है। हाँ, मैं सर आपको पहले इसमें अकाउंट्स का भी कोई मतलब नहीं आया, जी। मैं थोड़ी साहब आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। जी सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स विच द LIC हैज फ्लोटेड, जी। टू टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम, टू टाइप्स ऑफ पेंशन। जी and these two types of pension scheme are prevalent throughout the world. जी। Now one scheme is defined benefit, I am telling Defined you benefit. defined benefit, जी। and the other is defined contribution. अदर इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। Defined contribution. जी। In defined benefit, my lord, the premium is to be determined by actuarial valuation. ठीक है। And in defined contribution, 10% of the salary is deducted by the employer and remitted to the LIC in defined contribution. जी। Similarly, the warehousing corporation and the trustees took defined benefit policy, डिफाइंड बेनिफिट नॉट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। not defined अच्छा contribution, तो एक सेकंड ये ले लेते हैं ना, वेयर हाउसिंग। defined. But what happened that they were deducting premium from their employees, warehousing corporation, at the rate of 10% of the salary. मतलब सेकंड स्कीम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से Defined contribution. And they wanted the benefit of the defined benefit, but where the pension is much higher than the one as compared to defined contribution. जी एक सेकंड। जी So they initially they paid ad hoc premium, and thereafter when the LIC demanded premium, which was required to be paid under the defined benefit scheme, they said you please stop making any payment until further orders. who said that? The warehousing corporation. When did you I will not take your lordship through of the documents. when did LIC ask for higher premium? They said you stop making payment of pension. जी Now therefore we stopped making payment जी। as per their direction. वेयर इज दैट डायरेक्शन एनेक्सर, साथ में बताते जाइए। अब मैं सब बता दूंगा सर, एक एक अभी आपको मैं पूरा नटशेल में थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट से रेफर करूंगा। Now what happened that the employees to whom the pension was being paid as per defined benefit, they filed rate petition. जी Because the pension was stopped जी as per direction of the warehousing corporation itself, so they filed rate petition. Now the rate petition, Annexure R451 is a very detailed order passed by the learned single judge Deepak Mishra ji as he then was. और R451, it is dated 8/4/2004. जस्ट अ मिनट, दिया है आपने क्या इसमें? ये सेटिस्फाइड हो गया। अरे हो गया होगा, एक मिनट। अरे मैं तो अभी सर ये मैंने नहीं, इन्होंने फाइल किया है। हाँ मैंने फाइल किया है, मैं तो अभी सब बता रहा हूँ। एनेक्सर R4 R4 and 5/1 dated 8/4/2004. Follow that is because we are response number 4 and 5 to 4/5/1 looks. 4 5 Oblique one. Dated 8/4/2001, page 20 to 69. 8 4 2000 8/4/2004 and page 20 to 69 of the paper, of the return. जी In this order, जी the learned single judge said, जी you make a payment of rupees 3 crores 93 lakhs and odd, and the payment will be paid as per defined contribution, not defined benefit. जी That was the order. जी Against that, my lord, the latest patent appeal was filed, जी। and several writ appeals were filed. They Comparison. नहीं गलत है हमारे
And when my lord, that later patent appeal was filed, was pending, and the writ appeals, this Air India case came. Ji. And where my lord, all the in all the writ appeals, it was held that the matter was remitted to the learned single judge, and the learned single judge will decide. कर लो, मैं बुला लूंगा. मैं refer कर रहा हूँ. हाँ ठीक है, ठीक है. पहले ये बात आपने नहीं बताई थी ना, डिफाइंड बेनिफिट, सर, उस डिफाइंड judgment को हम कंट्रीब्यूशन. already- देखो सर, ये समझ ही नहीं सकते सर. विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा मत बोलिए. नहीं. वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एनीबॉडीज. नहीं, नहीं, प्लीज प्लीज, yeah. नहीं, दैट इज बियॉन्ड माय Sorry. कॉम्प्रिहेंशन. अच्छा. आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी. नहीं, ये मत बोलिए. चलिए, जी. इसको that will not. नहीं आता सारा कुछ. So in that the matter was remanded, Ji. and the learned single judge was to decide taking into consideration the Air India case. जी. Now the Air India case will not is set. 2005 का 8 एससीसी निकाल के दे. सर उसी में लगा हुआ है सर. लगा है, मैंने लगा है. फाइल किया सर. अच्छा. जी. इसके पैराग्राफ. हाँ. पैराग्राफ. हाँ. नहीं, हमारे वाली कॉपी नहीं. हमारी जी. वाली. है. हाँ, ये. जमा कर दीजिए. जी. Well, in the Air India case, what was decided was जी. that if the payment pension orders have been issued, जी. annuity has been taken, has been done, and pension of payment is started. The payment of pension is started. Then in those cases where the annuity was purchased, जी. payment pension orders were issued, and the payment was being paid. जी. Then the Supreme Court said that whatever policy might have been taken, but then the amount which has been started to be paid will have to be paid. You will not reduce it. जी. So there were 131 employees in which cases the annuity was purchased, and the payment pension orders were issued, and the payment was being paid as per pension payment orders. जी. ठीक. So such employees were 131 employees. So this learned single judge also pointed out yeah. जी. So such were the employees 131. So 131 employees. We was purchased, PPO was given to them, therefore pension was started. Okay. So in that case, the pension could not have been reduced, even though the policy would have been taken, different policy would have been taken. जी. So such 131 employees are being paid pension as per defined benefit. जी. They are continuously being paid, and there is no dispute about that. जी. Now what happened? जी. We received letters that it is not possible for us to pay the premium as per defined benefit. जी. कहाँ है वो लेटर? is annexed? Yes, that letter is annexed. R10. R10, and 4 and 5 are 10, page 102. 102. 102 minutes. Page 100. 2. 100. May I request you lordship to look at page 104. Just a minute. 104. One page 100. जी. एक मिनट रुकिएगा. Yes, sir. Yes. This refers to Yes. the letter dated 1/5. This is dated 23/5/2002. जी. 3 लेटर्स हैं. मैं 23/5/2002 का लेटर पढ़ रहा हूँ. ये 104 पेज पर है. जी. This refers to the letter dated 1/5/2002 and last round of discussions on 22nd May 2002 regarding group policies of MP State Warehousing Corporation, policy number so. We are sending herewith the employees data as so and so. We request you to value the liability as on 1/4/2002 under the above scheme. Now it is noted, this is important. It is noted that as on 1st April 2001, there was a deficit of huge amount as informed by the LIC officers. It shall not be possible for us to pay the deficit amount as the fund will not be sufficient to cover the liabilities in respect of accrued benefits as per the scheme. Therefore, after discussion, it is proposed that the scheme may be converted into defined contribution scheme with retrospective effect from 1/4/1996.
At present, there are 115 members, so and so, so and so. जी. Now, on receipt of such letter, we said that yes, we are ready to switch over to defined contribution, but then you will have to execute a deed of variance. So they did not execute a deed of variance. एक And will not. सेकंड रुक जाइए. Yes. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म. LIC का पत्र कहाँ है? 32 pages. मैं सर बता. जी. तो उसके बाद क्या हुआ साहब, इन्होंने पॉलिसी सरेंडर कर दिया और एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, और वो एग्रीमेंट रिकॉर्ड में है, मैं उसको आपको बता. दैट एग्रीमेंट इज एन एग्जैक्ट R4 458 minutes. 458. Page number 95. page number 95. MP Warehousing and Logistic Corporation, the trustees through trustee, and the insurance corporation and the life insurance corporation of India through its regional manager PNGS and divisional manager PNGS, divisional office Bhopal, have met and arrived at an agreement on the following terms. Number one, the MP Warehousing and Logistic Corporation Bhopal and the trustees do hereby surrender master policy number so and so, and the life insurance corporation of India is agreeable to accept the proposal of surrender of the aforesaid master policy. Then, that the Life Insurance Corporation of India will pay the pension to 131 retired employees of the Warehousing Corporation, the list of which is attached herewith as Annexure A. 131 defined that contribution basis shall be. The Life Insurance Company of India will pay the pension to 131 retired employees of the Warehousing Corporation, the list of which is attached herewith as Annexure A. So you are one of the 131 employees or other than 131? No, they are outside that. They are outside. Outside. ठीक. 91, outside that. 91, these are those category of employee, 91 employee, who, my lord, by virtue of order passed by this honorable court, my lord, in the pending case of. I will explain that, my lord. Otherwise, there would be a confusion. जो उन लोगों 131 लोगों की इन्होंने लिस्ट बनाई क्योंकि उनको पेंशन हमने नहीं बनाया, ये वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की उसका एग्रीमेंट से ऐसा प्रतीत होता है जी. कि जैसा इन्होंने कहा, जी. इसमें मुझे यहाँ तक डिस्प्यूट नहीं है, पर कंट्रोवर्सी वहां रेज करें जहाँ पर आई जी, बिल्कुल सही. कि जिन लोगों की एन्युटीज परचेज हो चुकी जी, सर. थी जी, सर. और जिनका पीपीओ जारी हो चुका जी, था, जी. उन 131 और जिनकी सर हमने पेंशन देना चालू कर दिया था, जी. उसको उस पर नहीं जा रहा, चालू किया नहीं किया, एन्युटीज परचेज हो गई, पीपीओ दे दिया गया, जी. उन सबको पेंशन देने का सही जिम्मेदारी LIC की आ गई. जी. बाकी के लिए जब LIC ने कहा कि कृपा करके आप डिफरेंस ऑफ प्रीमियम जो है कॉर्पस जी, दीजिए, जी. तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते. जी. देन दे आस्क्ड देम कि आप डिफाइंड बेनिफिट की जगह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में जी. आ जाइए, जी. उसके लिए एग्रीमेंट ऑफ वेरिएंस साइन कर लीजिए. जी. वो उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया. जी, सर. नाउ वी आर रीडिंग दिस एग्रीमेंट, जी, सर. इट सेज दैट द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज टू बी रिटर्न बैक टू द जी, सर. वेयर हाउसिंग जी, कॉर्पोरेशन इन रिगार्ड टू दोज एम्प्लॉइज अदर देन 131 जी, एम्प्लॉइज. जी, जी. यहां तक तो वो कोई अभी भी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी चल रही है एक सेपरेट पिटीशन में, वो भी एक झगड़ा नहीं, है, वो- पैसे नहीं लौटाए 11 करोड़ रुपए. इसमें उसका वो लौटाया नहीं लौटाया उसको बाद में देखेंगे. सर एक सेकंड, इफ माय लॉर्ड जस्ट बेयर मी फॉर नाउ. मेरा जो माय मैटर इज माय रिमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड द सिस्टम इन देयर. एयर इंडिया सेज द डे अ पर्सन रिटायर्स the annuities are purchased and the right get crystallized. नहीं when The day is retirement. no. नहीं, this is not so. There is a difference, please. Air India cannot be understood without the context, without the appreciation. There is a difference. जी. When warehousing corporation, your employer itself says Yeah. that please return back, Sir. and where was the occasion for LIC to purchase annuities in respect of these 91 employees? annuities पर मेरा जो कॉर्पस था वो पूरा का पूरा LIC के फंड में. सर मैं एक मिनट दिखा इनका दूंगा. केस सर अलग है. समझेंगे, रुक जाइए. देखिए, फाइनेंशियल स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट सही बात है. इंटरप्रिटेशन होता है, दैट इज द लॉ. Yes. वोडाफोन के केस में मैंने Supreme स्ट्रिक्ट Court has- इंटरप्रिटेशन ही किया है. हाँ, सर. चलिए तो उसी को देखेंगे. ये जो अभी लेट हिम फंड कंप्लीट. जिस दिन हम जी सर पहले लेट हिम कंप्लीट, विल कम बैक टू यू. Just- So, sir, the Life Insurance Corporation of India will pay the pension to 131 retired employees of the Warehousing Corporation, the list of which is attached herewith as Annexure A, under the terms of defined contribution. Well, they say you pay defined contribution, but we are paying the pension as per defined benefit in view of the Supreme Court decision and also by the learned single judge decision. जी. Now, as per balance available in their individual account एक and मिनट as नोट per करने दीजिए, प्लीज नोट करने दीजिए. ये 2000, नहीं 2011. बाद में वो सब कवर्ड है, हम सब एक एक करके सब हम बता दे रहे हैं सर. हाँ आपको पूरा मौका मिलेगा. जी सर. जी. सर,
defined as per balance available in their individual accounts and as per court order dated 8/4/2004 in WP number 4318. वही पढ़ वही agreement. वही एग्रीमेंट थर्ड Third. एनेक्सर ए के आगे सर, एनेक्सर ए के आगे से ये एग्जिट लोड तक तो समझ में आ रहा है क्लॉज 2 में। फिर उसके बाद में the excess payment made to the employees earlier shall be quantified and shall be placed before the honorable court for a decision at a later date. Yes. चल रही थोड़ा सा उसके पहले और पढ़ लें सर, Definition जरा सा, is pending. थोड़ा सा उसके ठीक पहले है। है नहीं आपने देखा ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पैरा 2 में सर, will pay the pension to 131 एम्प्लॉय employees of the warehousing corporation, the list of which is attached herewith As as an Annexure A under the terms of defined contribution. Yes. जी। As per balance available in their individual accounts and as per court order dated 8/4/2008 For in WP 2004 number 2004 and other connecting petitions passed by and the other single connecting judge. petitions passed by the learned single judge and the amount requisite for payment of such pension to 131 employees. इतना तो हो गया ना, मतलब कुछ समझ गए। अच्छा, Defined दूसरा contribution पेज ने कहा था आपने डिफाइंड बेनिफिट में दे रहे हैं उनको। हाँ, which is a higher outgo। हाँ, दूसरा पेज आ जाए। हाँ दूसरा पेज। The excess amount made to the employees earlier shall be quantified and shall be placed before the honorable court for decision at a later date. ठीक। That on refund of the corpus, as aforesaid, the Life Insurance Corporation of India shall not be responsible to pay any pension to any of its employees except 131 employees as mentioned in Schedule A. जी। And the master policy referred above shall terminate for all practical and legal purposes. जी। LIC will refund the entire corpus of rest of the employees along with interest to WP MP Warehousing Logistics Corporation without any exit load. In case of ex-employees who have filed LPAs in the High Court, the corpus on the basis of defined contribution shall be retained by the LIC until court cases are settled. This agreement is subject to the approval of the High Court. In witness whereof so and so. Now sir, 131 employees की लिस्ट लगी है इसमें एनेक्सर ए, और उसके बाद ही जो है जितना अमाउंट रिक्विजिट था 134 वन एम्प्लॉयज के लिए, उसके अलावा जितना पैसा था वो हमने विद इंटरेस्ट विदाउट एनी एग्जिट लोड इनको पेमेंट कर दिया। वो पेज आपको 100 में मिलेगा, दैट इज 11,30,78,166। दिस अमाउंट हैज बीन पेड, दिस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय देम, दैट इज एट पेज 100 एनेक्सर R459 sir. 11 crores 30,000 30 lakhs 78,166. जी। This receipt is at page 100 sir. जी। सर हमारे बहुत सारे इनके साथ डिस्प्यूट है, तो वी विल नॉट एडमिटिंग व्हाटएवर किनके साथ डिस्प्यूट है? LIC के साथ? Yes. अब बताइएगा ना आपके मतलब क्योंकि सर माय सीनियर इज सेइंग कि वी एक्सेप्टेड बट डिस्प्यूट्स आर देयर। नहीं बात यार डिस्प्यूट होके पैसा आपके खाते में आ गया ना। आपकी जानकारी में बस ला रहा हूं, बाकी ठीक है, पैसा आपके खाते में आया नहीं आया इतना वो तो आ गया, वो बस चलिए आगे की बात करेंगे इसके बाद। अब इनका केस जो है पिटिशनर का सब ये पैराग्राफ 12 से मैं आपको पढ़ देता हूँ, वहां से चालू होता है पैराग्राफ 12 हो आप दी रिटर्न सर, पैराग्राफ 12। आप 26 मिनट में कंक्लूड करिए, अब नहीं कर पाएंगे। नहीं होगा सर, होगा तो नहीं सर, इट्स हैविंग लॉन्ग हिस्ट्री, क्योंकि सर आप पूरा सर ये जजमेंट भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, राइटली तो सब्सिक्वेंट जजमेंट भी बहुत पूरा सारी पढ़ना चीजें हैं, पढ़ेंगे, बहुत सारी भाई चीजें पढ़ने के लिए मना कहाँ कर रहे हैं? नहीं पर सर सच एन इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, आपको ना समय देने के लिए मना कर रहे हैं ना सुनने के लिए मना कर रहे हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे कर देते हैं सवा 2 से, सर, नेक्स्ट वेडनेसडे सवा 2 से कर दें, तब 4:30 तक कंक्लूड कर दें। कर देंगे, कौन आप तीनों कर देंगे कि आप कर देंगे? मैं इसलिए शुरू में आई वुड हैव कंक्लूडेड विद इन हाफ नहीं, एन सर वो माय लॉर्ड इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि पूरी चीजें इट हैज टू कम ऑन रिकॉर्ड ना। सिर्फ 10 मिनट और सुनिए, उसको फिर उसका लिखा के फिर इसको अगले वेडनेसडे थर्सडे को सुनिए। 10 मिनट के लिए हाँ पैरा से हम पढ़िए। अच्छा सर पैरा 12। नहीं भाई देखिए, नटशेल में आपका कहना यह है विदाउट प्रोलॉन्गिंग द आर्गुमेंट्स कि जहां तक 131 लोग हैं दे आर ऑन अ डिफरेंट फुटिंग, ठीक है। जहां तक बाकी लोग हैं, पहली वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द नंबर, आपके जो दूसरे लोग हैं पिटिशनर्स हैं, उनका इशू यह है कि क्योंकि बेनिफिट स्कीम में जो है उनको वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने डिफरेंस ऑफ प्रीमियम जो एक्चुरियन डिसाइड करता है वो देने से मना कर दिया, तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम में आने के लिए आपने कहा, इन्होंने उसको एग्री नहीं किया और अपना पैसा वापस ले लिया। Therefore you have no liability to pay any pension to these persons other than 131 persons। यही केस है ना आपका? यही अच्छा नहीं, इनका केस है साहब, इनका 95 लोगों का केस अलग है थोड़ा सा। अच्छा, वो 90 वही मैं सेक्शन 12 से पढ़ रहा हूँ सर। क्या है थोड़ा नक्शे में बता दीजिए। हाँ नक्शल में साहब ये है कि इन्होंने हमको 95
लोगों की लिस्ट भेजी और उनका प्रीमियम भेजा और ये कहा कि मैटर्स ऑफ ड्यूटीज है। तो इंटरिम ऑर्डर हुआ था कोर्ट का इनिशियली इंटरिम ऑर्डर, वो भी हम आपको बताएंगे लिखा है। तो उससे उन्होंने कहा था कि 10% के हिसाब से इनको पेंशन देना। तो वो 95 में से 77 लोगों ने अपना पैसा ले लिया वापस पूरा। अच्छा। और अब 77 वो चले गए और ये 4 जो पिटिशनर हैं इनमें एक ने भी, इनमें से एक केसी जैन, उसने भी पैसा ले लिया और एक सुधा पाटिल है पिटिशनर, वो विद हर एग्रीमेंट कंसेंट वो 10% के लिहाज से पेंशन अपना ले रही। ठीक है। अब बचे केवल 2। जी। केवल 2 दो नहीं, 77 ने पैसा वापस ले लिया, उसके अलावा 95 में उसका भी now 95 is a different class. हाँ, ठीक है, 131 is class A, 95 is class B, and others they are not before us. No. They are C class whose amount has been refunded to the. So they are those person who were in job and they are the person who retired after surrender of policy. वो कैटेगरी वो उन्होंने पैसा, उनका तो कोई डिस्प्यूट नहीं हमारे सामने नहीं है। तो अब ये दो 95 है, इनमें से 77 लोग पैसा ले गए तो वो भी खत्म हो गए। अब बचे 13 और 5 18 लोग। हाँ। ठीक है। अब इन 18 में से आप बोल रहे हैं एक जना पेंशन ले रहा है 10% के हिसाब से। नहीं कुल 13 है सब, 4 लोगों का बनता नहीं है, उन्होंने प्रीमियम दिया नहीं, कुछ लोगों का वो हमने लिखा है सब इसमें, उनको प्रीमियम दिया नहीं, उनकी कोई पेंशन नहीं बनती। तो ऐसे 4 लोग और निकल गए। तो 77 और 4 और 2 लोग 14 बचे, 13 बचते हैं, मैंने हिसाब दिया सर। हाँ। उन 13 लोगों को हमने ये कहा कि इन 13 लोगों को जो है वो इंटरिम ऑर्डर से इन्होंने उसमें लिखा, हमको लेटर दिया कि इंटरिम जो ऑर्डर है 10% वाला, उस हिसाब से आप इनको दे दीजिए। उसके बाद हमने लिखा है, इनका कोई डिनायल नहीं है कि ना इनके में कोई पेमेंट पेंशन ऑर्डर हुआ, ना हमने एन्युटी परचेज किया, ना हमने इनको पेंशन दिया। तो कोर्ट के ऑर्डर से इंटरिम पेंशन दे रहे थे। तो हमने लिखा कि इनका पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपना जो प्रीमियम है वो पूरा प्रीमियम का रिफंड दे दे विद इंटरेस्ट अप टू डेट विदाउट एनी एग्रीड लोड, या 10% के हिसाब से पेंशन दे दे। ये हमने इनको ऑफर नहीं देखिए, लेकिन थोड़ा सा इफ यू कैन बी मोर जस्ट, आज तो होगा नहीं, कंक्लूड होगा नहीं, आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए कि यह जो 13-14 लोग जो भी बचे हैं जो कि एलिजिबल हैं, ठीक है, उनको क्या आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पेंशन देंगे? क्योंकि इट इज ट्रू दैट दे हैव नॉट पेड द डिफरेंस ऑफ द प्रीमियम as for to avail the benefit of defined benefit scheme. Yes. ठीक है। Now the only instructions 10% is because by तो हमने सर लिखा है, एक सेकंड 10% is by virtue of interim orders of the court. इंटरिम ऑर्डर। Now warehousing corporation itself had offered कि इनको 133 का था, क्योंकि एन्युटी परचेज हो चुकी थी, पीपीओ जारी हो चुका था, इसलिए आपने एयर इंडिया की लाइट में उनको डिफाइंड बेनिफिट स्कीम में दिया। ठीक है, लेकिन इनको क्या आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम में देने को तैयार हैं? इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए। वो सर एक सेकंड, हमने ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनके और हमने लिखा भी है, रिटर्न में आपने लिखा है कि दैट 2 ऑप्शन है इनके पास, हमने दिया इनको, या तो अपना ये जितना आपने बता दिया वो ले ले, वो नहीं लेंगे, वो घाटे का सौदा है। अच्छा वो 10% नहीं तो पेंशन ले ले, 10% के ज्यादा 10% नहीं। अब यही हम सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज देयर विजडम वेदर दे वांट टू टेक बैक देयर मनी और नॉट, बट as a neutral umpire I'll say that is a loss making proposition. ठीक है। Now the second issue is that 10% was an interim arrangement made by the court. It may be 8%, it may be 15%, we don't know. Whatever may come as per the defined contribution, because there was a defined contribution. Try to understand and be reasonable to it. There was a defined contribution, 10% of their salary was deducted and deposited with you. That amount is still with you qua these employees. ठीक है। सो आप इनको वर्कआउट कर लीजिए, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में इनका कितना बनता है उतना दे दीजिए, एरियर्स के साथ में दे दीजिए। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हम सब देने को तैयार है, तैयार है। हाँ, झगड़ा है सर, हमने लिखा है, हम पहले उनको बोलने दीजिए ना, एक मिनट, तो यहाँ बात छोटे में खत्म हो जाएगी। डिफाइंड बेनिफिट में चाहिए ना तुम्हें, तो नहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिफाइंड बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, दैट इज द डिस्प्यूट, कभी भी दे देंगे हैं? तो दे ही नहीं तो तो डिस्प्यूट बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। आप अभी से हमसे लिखवा लीजिए, नहीं मिलेगा इन व्यू ऑफ द कम्युनिकेशन मेड बाय योर कॉर्पोरेशन। उसको पॉइंट सर, एक सेकंड सर वही फैक्चुअल सारा झगड़ा ये है एक सर फैक्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैक्ट जब पूरे क्लियर होंगे भी तो इन्होंने अपना पक्ष रखा है। सर मैं फैक्ट क्लियर होंगे तो वेदर दीस पर्संस आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट एट पार विद दोस 131% और not. नॉट। This is दैट इज द पॉइंट। चलिए तो सुनेंगे। Whether the LIC was justified in demanding my lord excess money. अमित जैन को बुलाओ। सर एक सेकंड, ये एक क्रूशियल डेट है जो हम साहब मिस कर रहे हैं कि सर when the annuities can be said to be purchased. सुप्रीम कोर्ट ने बोला the moment you retire the annuities are said to be What purchased. is your date of retirement now? That 2002 सर, तो मैं पढ़ा रहा 2002. था। And when was this communication made? बहुत बात का ये यही 2011 गलत है, यही गलत है। सर ये 11 में इन्होंने सबमिट किया। फैक्चुअली कम से कम कोर्ट के सामने फैक्चुअल पोजीशन आ जाए, आप अप्लाई करेंगे और फैक्चुअली तो आपके पास सही मैं आप बता दीजिएगा सर, गलत होगा तो आप पहले पूरा सुन ले, उसके बाद पहले मुझे सारी उन्होंने कहा समझ नहीं आएगा When I say my- नहीं भाई आकाश जी, मैंने तो आपके बिहाफ पे खुद ही आपने आपको भाई ऐसा नहीं होता है। इवन दिस योर जूनियर, आपकी जूनियर है ना? जी जी सर, है? हाँ, वो भी आती है, मैं उनको भी नहीं कहता कि आपको समझ में नहीं आता। मेरे को सिर्फ एक बात पे गुस्सा आती है, जी सर। वो इस केस में रिलेवेंट नहीं है, बट लेट मी क्लैरिफाई, जी। जब वकील साहब या पक्षकार झूठ बोलता है। बाकी मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, एवरीबडी हैज अ राइट एंड एवरीबडी कैन मेक मी अंडरस्टैंड अ केस बेटर देन एनीबडी एल्स। सर ये केसी साबू हैं, he stood superannuated on इसकी लिस्ट बना के चार्ट दे देना, अभी तो इसको 31 मैं थर्सडे को लगा रहा हूँ, 31/3/2002 थर्सडे को सुनेंगे जी सर। देखिएगा। These petitions
this petition एक ही है ना, एक ही है ना. This petition raises an interesting question of law that petitioners are retired employees of Madhya Pradesh Warehouse and Logistic Corporation Limited. Full stop. There was an agreement between the warehousing and logistic corporation limited, उधर उसका short में डाल देना, and the LIC for extending the benefit of pension to the employees of the said corporation. Next, where there are three categories of employees, namely one in relation to whom annuity was purchased on the eve of their superannuation and PPO was issued. Full stop. Since this is the Honorable Single Judge and the Honorable Supreme Court in case of Air India 2008, 2005 का age. 8 SCC, page 404. In case of Air India employees self-contributory superannuation pension scheme versus Kuria, Kose, V. Cherian and others 2005 8 SCC 404, they are being paid pension under the defined benefit scheme. Full stop. Next para. There is no controversy in regard to 131 employees and only for this purpose of reference they have been referred to here. Next para. The controversy in regard to the petitioners and other similarly situated employees which constituted bulk of 95 employees stood in the realm that there are two types of pension schemes which are operational under the fold of Life Insurance Corporation of India. Next para. These schemes are called by name of Roman 1, defined benefit scheme, and Roman 2, defined contribution scheme. Full stop. It is pointed out that the difference between the two schemes is that in defined benefit, comma, as the name suggests, the benefit which is going to be accrued to a beneficiary is fixed, but looking to the financial fluctuations in the market, actuaries define the amount of contribution, that is premium, वही तो लिखा रहा हूं मैं. आप सुनिए तो सर, सुनिए, वो लिंक टूट जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं लिखा पाऊंगा. आई एम नॉट सो ब्रिलियंट. हाँ, क्या हुआ? Premium, and on the basis of the actuarial analysis, varying premium is payable on year to year or month to month basis. Next well. Under the defined contribution scheme, a fixed contribution is drawn from the employees, that is the targeted beneficiaries, which was 10% of their salary in the present case, and then thereafter on the maturity of the policy or on retirement of the employee, whichever is earlier, a fixed amount is paid as a pension in favor of the beneficiary. Next well. It is not in dispute that LIC had sent a communication to the Warehousing and Logistics Corporation asking them to pay differential amount of premium to continue with pension scheme under defined benefit scheme. Pension under defined benefit scheme. Full stop. This communication is enclosed along with the return of the respondent number 4 and 5 as annexure R4,5/1 dated 8/4/2004. Full stop. Next para. 8/4 date सही है ना? 8/4/2004. Next para. This communication was replied to by the Warehousing Corporation wide annexure R4,5/10 page 104, wherein Warehousing Corporation had expressed its inability to pay the huge deficit of premium on account of the difference of premium calculated by the actuarials and asked the LIC to switch to the defined contribution scheme, that is scheme 2. Next para. Upon receiving such communication from the Warehousing and Logistics Corporation, the LIC asked the Warehousing Corporation to sign a deed of variance. Full stop. This company, instead of signing the deed of variance, an agreement as contained in annexure R4/8 was signed, according to which LIC was to continue to entertain the pension claims of 131 employees referred to above
and was required to refund the premium along with accrued interest without any exit load. Full stop. Accordingly, sum of rupees 11 crores 30 lakhs 78,160 was refunded to the Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation. Next para. It is admitted that since matters were sub judice in regard to 95 employees, their premium was retained by the LIC, and as an interim measure, it was decided to pay them pension at the rate of 10%. Full stop. Next para. Shri Agarwal points out that an option was given to these 95 employees to either accept refund of their premium with interest without any exit load or continue to enjoy benefit of pension at the rate of 10% as per the interim directions of the High Court. Full stop. Shri Agarwal submits that in the first instance, 77 employees of Warehousing and Logistics Corporation opted for refund of their premium along with interest without exit load. Full stop. Thereafter, subsequently, कितने लोग और exit हो गए? हाँ, कितने और exit हो गए ये पूछ रहा हूँ मैं. 77, 95. Dash employees also opted for exit load. Next where it is pointed out that out of the remaining employees, which constituted the chunk of 95 employees, which will be dealt with as constituting group B of the employees with which we are concerned in this writ petition, some employees opted for pension at the rate of 10% as was offered by the LIC, and 4 of the employees were found not to be eligible for any pension as there were discrepancies in the record of their payment, premium payment, etc. Next para. Shri, हाँ ठीक है लेकिन पूरी कहानी तो लिखानी पड़ेगी. At this stage, Shri Agarwal submits that in this petition, dispute is only in regard to 2 petitioners, in as much as one of the petitioners, namely Srimati Sudha Patil, has accepted 10% pension and is in receipt of the same, whereas Kailash Chandra Jain had exited from the scheme by accepting his accumulated premium along with interest and exit load. Next para. Shri Agrawal, on persuasion of this court, accepts that they have admitted in their return that they are willing to extend benefit of